बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो पोएम है हमारे पास स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, बेटा इसकी समरी है। बेटा नोट्स में इसकी दो किस्म की समरीज दी हुई हैं, स्टैंडर्ड और इजी। बेटा जी इजी समरी है, आप ये करेंगे, ये स्टैंडर्ड समरी के बराबर है, तो लिहाजा आप यहाँ से करेंगे। नीचे इसके नोट्स एंड कमेंट्स दिए हैं, आप उसको शामिल करेंगे। आपको सामने सेकंड पैराग्राफ में लाइंस लग रही नज़र आ रही हैं और एक पैराग्राफ कटा हुआ नज़र आ रहा है। बेटा ये आपने जो कटिंग है, ये कटिंग आपके इस समरी में शामिल नहीं है, लिहाजा आपने इसको पूरा याद करना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ फेमस अमेरिकन पोइट of this century. His poetry is simple but profound in thoughts. Stopping by woods on a snow evening shows the poet's pure delight. The poet stops near a small forest. Perhaps the poet knows the owner of the forest, who lives in a nearby village. However, he is satisfied that the owner does not see him watching his woodland. The horse of the poet wonders why they have stopped at a barren place. To ask this question, it jingles its bridle a bit. It seems as if it is asking its rider whether they have suffered something wrong. There they could hear the slight sound of soft wind and the falling of snow. The woods present a soothing sight. It looks beautiful, but it is thick and dark as well. The poet wants to stay there and enjoy the cool, balmy scene, but he remembers he has to do a lot of work. Therefore, he starts off. He knows that he will have to do certain duties before going to bed. बेटा ये जो नोट्स एंड कमेंट्स हैं, देखिए आपको ये नीचे नोट्स एंड कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। बेटा ये पोइट की इंट्रोडक्शन है, आपने इसका इंट्रोडक्शन बनाना है और इसको भी साथ आपने मिला लेना है पैराग्राफ 1 के तौर पर। थैंक यू, बेस्ट विशेस। याद करके आपने लिखना ज़रूर है और हमारा स्लोगन है आगे बढ़ते जाओ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।